रमोना, फूड मॉडलिंग हंट आजकल चल रहा है, तो अगर आपको चांस दिया जाए, आप एक एस्पायरिंग मॉडल होती तो क्या आप इसको ज्वाइन करती हैं और क्यों करती हैं, अगर करती हैं? अगर मैं एस्पायरिंग मॉडल होती तो ज़रूर ज्वाइन करती, लेकिन मैं हूँ नहीं, क्योंकि मेरा फिगर ऐसा है ही नहीं। और I think for a model, you always have to look after your nails, you have to be very well dressed, your hair, your makeup, everything should be perfect. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बाल अभी एक कुछ गांठ जैसा दिख रहा है, and I'm not, your perfect model. मैं हमेशा ऐसे बैठती नहीं हूँ, ठीक से बहुत बात नहीं करती हूँ. I don't do all these things which is required of a model. So yeah, right now I wouldn't. Also, the fact is I'm not 21. I'm 4 years above that age limit, but it doesn't matter. If I was a model, I would definitely do it. ये एक इंटरनेशनल लेवल का मॉडलिंग हंट है, तो आपको क्या लगता है कि इससे इंडियन मॉडल्स को कितना बूस्ट मिलेगा, किस तरह का उनका फ्यूचर होगा इसके बाद, अगर जो सेलेक्ट होते हैं? I think काफ़ी बूस्ट होगा, क्योंकि it's something that's really really hot, especially in Europe right now. The whole India thing, चाहे घर में हो, चाहे कपड़े हो, जो भी हो, अगर इंडिया से है तो वाह, सुपर है, एग्जॉटिक है, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारतीय स्त्री जो है, शी इज़ गॉट अ सर्टन अमाउंट ऑफ oomph, and at the same time she balances it out with an earthiness and a very spiritual quality, and I think that's what makes the magic happen as far as the Indian woman goes. आपको क्या लगता है कि क्या टिप्स देनी चाहिए एस्पायरिंग मॉडल्स को? हाय, आप क्या आप देंगी? मुझे देख के मेरी तरह कभी ना ड्रेस कीजिए, कभी ना बाल कीजिए, कभी ना कुछ कीजिए. Then you definitely be successful. अगर आपको कोई ब्रांड एंडोर्स करना हो, इंटरनेशनल ब्रांड, तो आप कौन सा पसंद करेंगे? वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया. आई होप ऑल द एडवर्टाइजर्स आर लिसनिंग. Any sort of, Pepsi, Cola, Coke, Sprite, Mountain Dew, anything of that sort, I'm very happy to do. If you have any nice sporty clothes, Nike, Reebok, all these things, I'm very happy. I'm also very happy being an MTV brand ambassador. And what else? और कोई भी ब्रांड्स है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बता दीजिए. I'll think about it. I won't charge you too much. Gianfranco Ferri. I love him. So his clothes for free at model. रमोना, फूड मॉडलिंग, लास्ट क्वेश्चन, फूड मॉडलिंग हंट जीतने के लिए एक मॉडल में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? I think she needs to have a good height. That's very important. I think she needs to be on the slimmer side and toned, but I'd also not say skinny. I don't think skinny is very exciting. You need to have a little bit of flesh, because I think that's what the Indian woman is about as well. And the rest is just her attitude and her confidence, knowing that she can carry anything off, from a sari to pretty much nothing, to maybe even a bikini or whatever. But she's got to have that confidence, and I think an Indian woman carries off a sari and other Indian clothes like no other woman in the world can. So she's got an advantage over everyone else. And Ramona, we want you to wish something for the aspirants of this modeling hunt. Please name it also, Ford Modeling Hunt. Ford Modeling Hunt. Yeah. Ford Supermodel Hunt. Anyways, you can put it anyways. Ford Supermodel Hunt. Yeah. To all the girls at the Ford Supermodel Hunt, good luck! Hope you girls just have the attitude, have that zest, have that zing, have all that it takes to be a model and just make India proud internationally. Go for it. Thank you so much. Thank you.